टू एक्ट है, तो हिंदी में हम ट्रांसलेट किए तो अधिकार का क्या, हाँ माने अधिकार का अधिनियम ना, तो हम बोले अधिकार का अधिनियम ही कौन वर्कशॉप होता है। दो पैसा कमाऊँ ये जरूरी है, तो 2 पैसा कमाऊँ ये जरूरी है। इसका हेडिंग है दूर अहाँ से छी, मतलब आपसे दूर है, दूर अहाँ से छी ये मजबूरी है, 2 पैसा कमाऊँ ये जरूरी है। बउआ मतलब छोटे बच्चे को बउआ बोलते हैं। बउआ के स्कूल के फीस कत्ता से लाए, मतलब बच्चे का स्कूल का फीस कहाँ से लाऊंगा। बुच्ची ला नया फ्राक कत्ता से लाए, मतलब बेटी के लिए नया फ्राक कहाँ से लाए। दूर अहाँ से छी ये मजबूरी है, 2 पैसा कमाऊँ ये जरूरी है। Right to act. I got an email about it, and what attracted me to the concept was of participatory theatre. So I wanted to explore tools and the methodology of participatory theatre itself, the philosophy behind it, what the concept entails. So, with so many organizations working with children, there are very few that sort of acknowledge the fact that children themselves have a voice. They're not people who are, they're not sub people who need to be told things to. Adults don't need to be condescending to them. They are intelligent human beings who can participate in action for social issues. I mean, they have their own voice. Another thing that attracted me was it being child and youth centric. So far, what I've done, I've largely worked with adults, I've largely worked with women. So, even though I'm aware, I'm not really conscious of children and the way they look at things, or maybe the way they can be involved in, with work when I'm working in the villages. So that was exciting to me, trying to learn for myself and grow as an individual myself. About how I can understand the world through children's eyes. पार्टिसिपेटरी थिएटर वाली जो कॉन्सेप्ट है, जो काम करते हैं, वास्तव में हमारे लिए कॉन्सेप्ट नया था, जो हमें बेंगलोर तक खींच के लाने में मदद किया। अगर पार्टिसिपेटरी थिएटर नहीं होता तो शायद हम नहीं होते। So the days so far has been, I think the session is giving us a lot of time to know each other, all the participants, than having head rushed into the issue itself. So there are many topics of discussions, and which is giving us a slight introduction of what we will be up to the next 3 or 4 days, but it's giving us much more space and time to get to know each other, where we are coming from, how we understand the world, how we're looking at each other, what are our objectives of coming here. So to understand each other, and I'm assuming that it is for us to work together for the next 3-4 days. One thing I really enjoyed was the session in the morning about men and women sitting separately in circles and discussing about what could be differences and what could be expectations of us from each other. That I thought was a really amazing exercise. It literally acknowledged differences and put forward and helped us put forward what we expect from each other. So it might not solve all issues of gender differences or inequality, but it's definitely a good start. I think I really enjoyed that. लगता है कि फर्स्ट थिंग इज कम्प्लेक्सिटी जो है, जैसा कि आपने कहा सुपेरियरिटी हो या इन्फेरियरिटी हो, वो नहीं होना चाहिए, सोच पे नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली ईगो की बात जो उसी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करता है, तो वो ईगो नहीं होना चाहिए, जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थली कुछ हमारे फिजिकल कंडीशंस हैं, अगर हम उससे गुजर रहे हैं तो उसकी तरफ हमको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। थिएटर एक ऐसा चीज़ है ना, खासतौर पर नुक्कड़ नाटक या ड्रामा एक ऐसा चीज़ है जो कल भी हम बता रहे थे कि वास्तव में क्रांतिकारी चीज़ है, बहुत माने आग बोने वाली चीज़ें होती है। अगर हम एज ए टूल इस्तेमाल करें और इसके चीज़ों को ना समझें तो कोई अहमियत नहीं रखता है। और शायद कल का प्रयास प्रवीर जी का यही था कि जो
वास्तव में समाज क्या है, समाज की स्थितियाँ क्या है, हमारी सोच क्या है, अगर उसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं ना, तो यूज करेंगे तो वही करेंगे कि आंदोलन के चीज़ों को जो एजेंसी अपना ब्रांड बना के बेच रही है। The debates have been really nice. It's been very engaging. Everyone is sort of trying to listen to each other. But there are a couple of things that sort of make you not so comfortable. Like the first day, we sort of decided that we would listen to each other and be sensitive towards the fact that there are women in this group. Yesterday, when the debate sort of moved towards talking about gender and whether a woman has the right to decide whether or not she wants a child, how many children she wants, when she wants a child, there were people who were trying to make their voices heard over others. So there was a lot of putting down of people in that sense. Some people could not talk. Also, there were people who weren't engaging in the debate, probably because some people were louder or they probably just felt uncomfortable with the issues. Couple's choice. Couple's choice. दोनों मिलके Woman's choice. One really needs to be sensitive about what rights are, who has these rights, and then take it to children. I mean, if we are having such contradictory opinions and perspectives amongst ourselves and we are not giving each other space to talk, then what we do with children when we work with them is a little scary again. There were a number of people who came up and who said that I had a very disturbing night or I had a sleepless night because it struck to me, and I realized that it's the welfare approach with which I'm working. That's the approach with which I've been working most of my life. It struck me. So that sort of change, that sort of recognition and realization, I think there are different aspects of this workshop that have come together maybe in supporting the person to recognize it and express it. One is, one I think is the kind of facilitation. There is no teacher or there is no facilitator who will say stop talking. There's a lot of freedom. So the past 1.5 days there's been that culture of openness and freedom that has grown with the group. And another thing is the building relationships with the participants itself, building rapport. Last night we all danced together and sang together and laughed at each other, laughed at ourselves, and all in good humor. So that another environment reason maybe why that person opened up to it. Third, and I think most of the credit goes to the individual, himself, where he's had the guts to face himself with what he's been up to all this life. But आप हमें ये बताइए कि हम यहाँ वर्कशॉप चाइल्ड राइट्स के थिएटर बेस्ड पार्टिसिपेशन पे आए हैं, तो हमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब अभी भी तय नहीं हो पा रहा है कि मैं पॉवर्टी पे फोकस करूँ, पॉपुलेशन पे फोकस करूँ, या स्कूल पे फोकस करूँ, या डिसेबिलिटीज़ पे फोकस करूँ. समझाना नहीं है, नाटक हमें करना नहीं है, तो फिर हमें करना क्या है? तो वो वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है फिर? वर्कशॉपला आल्यानंतर पहिल्या दिवशी आपण गरिबी काय आहे हा विषयावरती चर्चा करायला सुरुवात केली. तेव्हा वाटलं की अरे वा, चांगला आहे, सामाजिक विषय आपण ह्याविषयी चर्चा करतो आहे, चांगलं आहे. पुन्हा संध्याकाळी आपण त्याच गोष्टी अशा वेगवेगळ्या समाजातल्या विषयांवरती चर्चा केली. तेव्हाही वाटलं की ठीक आहे, एक बॅकग्राऊंड तयार होत आहे थिएटरचं. माझा अनकम्फर्ट लेवल म्हणजे थोडंसं चलबिचल मनाची सुरू झाली ही काल सकाळपासून, की पुन्हा आपण भेटलो आहे आणि पुन्हा आपण कुठल्या तरी विषयांवरती चर्चा करतो आहे. असं वाटायला लागलं की ह्याला दिशा नाही आहे.
हे कुठेतरी दिशाहीन आहे. लेकिन जब ही सहभागिता वाली बात आती है कि नहीं हम काम करेंगे लेकिन इसमें आप भी सहभागी होंगे, उसमें आपका निर्णय होगा, आपकी सहभागिता होगी, आपकी पूंजी होगी, आपका निर्णय होगा, आपका लीडरशिप होगा, अगर इस तौर पे काम करते हैं तो लोगों में इंटरेस्ट जगता है और लोगों को लगता है कि ये मेरा काम है, हम रहें या ना रहें, अगर लोगों को ये समझ में आती है तो कंटिन्यू लेके जाते हैं. और ख़ास तौर पे हमारा पर्सनल तौर पे मेरा मानना है, मेरी ज़िंदगी की एक सोच है, मूवमेंट जो हमने देखा उसमें कि अगर वास्तव में ख़ास तौर पे अगर आंदोलन को लेके आगे जाना है तो इसमें सहभागिता ज़रूरी है. अगर एनजीओ मोड में काम करना है तो सहभागिता चल सकता है. त्यामुळे आत्ता ह्या स्टेजला वर्कशॉपच्या मी बऱ्यापैकी खऱ्या अर्थाने इंट्रोस्पेक्शनला मी सुरुवात केलेली आहे की मीच माझ्या भोवती जी लेबल लावून घेऊन आलो होतो की मी सेव्ह द चिल्ड्रनचा प्रतिनिधी, मी बालहक्कांसाठी काम करणारा प्रतिनिधी, मी पोस्ट ग्रॅज्युएट मास्टर्स इन कम्युनिकेशन. आता ह्या क्षणाला जर मला सांगितलं तर हे सगळं गळून पडलेलं आहे. मला बालक कोण हे क्लिअर नाही आहे, हे कळून चुकलेलं आहे. मला हक्क म्हणजे काय हे नक्की माहीत नाही आहे, हे कळून चुकलेलं आहे. बालहक्कांसाठी मी काम करतो तर त्यांच्या संदर्भातले काय काय अधिकार आणि नियम झालेले आहेत हे नक्की माहीत नाही आहे. माहीत असेल तरी आय कॅन म्हणजे मी ते थिअरॉटिकली सांगू शकतो, पण ते मला समजलं आहे का तर नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची जाणीव होते. त्यामुळे एका दृष्टीने मी म्हणेन की हे चांगलं आहे की हे मला डिलर्निंग होणं महत्त्वाचं होतं, कारण की इथून पुढे मी जे शिकेन ते व्यवस्थित आणि डोळे उघडे ठेवून शिकेन. कुठेतरी मला मोकळं झाल्यासारखं वाटतं. मैंने पहले भी बोला था कि वर्कशॉप में आने का ऑल टुगेदर डिफरेंट मकसद था. ऑफ कोर्स वॉल्टियर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम यहाँ पे कर रही हूँ, पर वो मकसद से नहीं आई थी. सोचा था कि फिल्म थिएटर के बारे में कुछ और जानने को मिलेगा, पर ये वर्कशॉप में आने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं आती तो मैं शायद वैसे ही रहती. मैं क्या मिस करती मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे. मेरा एटीट्यूड, मैंने कल भी सारा दिन इसी के बारे में बात करी, और ये सिर्फ इस वर्कशॉप में या मेरे फील्ड में या मेरे काम में नहीं, मेरी ओवरऑल लाइफ में बहुत चेंज हो गया है. ये चीज़ मुझे समझ में आई. और मैंने जैसे बोला, मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके बहुत डिस्टर्ब भी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा. जैसे वो वही वाली बात कि हमें हमेशा लगता है क्वेश्चन इज़ इक्वल टू सम आंसर, एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मेरे जैसे और लोग भी, हम बोलते हैं ओ अभी क्वेश्चन आएगा तो इसका कुछ आंसर हमें बोलना है, और कुछ सेट पैटर्न वाला आंसर हमें कुछ बोलना है. तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, जो मैंने किसी ने मुझे बताया, सीखा भी नहीं, उसको मैं सीखा हुआ नहीं बोलूँगी, मैं खुद एक्सप्लोर कर सकती हूँ उसके बारे में. और मैं 26 ईयर्स की हो गई हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक नहीं किया है वो. और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे आज वो वाली सारी मेरे दिमाग में हलचलें हो रही है. जब एक नर्सरी में फर्स्ट क्लास में बच्चे को लेके जाते हैं ना, तो लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं क्या सिखाएंगे. अब सडनली मेरे को ऐसे लग रहा है कि आई नीड टू गो बैक. आई डोंट वांट टू गो बैक टू स्कूल, बट आई नीड टू गो बैक समवेयर. कहीं पे मुझे अब दोबारा सीखना शुरू करना है. Nothing is directly asked us. Nothing has been asked directly till now. Everything they are posing a question and ask us to think. And it is must for us to think something and come out with a solution. It is nothing but a participatory. And we are not a formal listeners or spectators to the program. And whatever is happening, that is with our will and wish and thinking it's happening. And everywhere our part is there. We are expressing our thoughts freely and becoming knowledgeable. This is the boy actually. We were doing the participatory committee kind of exercise in the morning when we were trying to decide what kind of legislations for children should go down. There was a lot of rush to reach a decision, and there were points in which people at various points said
just wrap it up, just finish it. And this is during a participatory theatre workshop with people who are sort of giving thinking differently a chance within an exercise which is a mock, where we don't really have the kind of pressures that come to you when you're working within a system. So I was just wondering then how if it's even possible to like do those things in reality, so to say. ये ब्लैंक पेज हम लोगों ने इसीलिए छोड़ा है कि बच्चा खुद से डिसाइड करेगा कि वो जितनी भी चीज़ें हैं या उसमें और भी 50 डालनी है तो वो इसमें डाले। तो आपको वो भी समझना चाहिए कि भाई आपको क्यों यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब तक हम लोग यही तो समझते आए हैं कि हम लोगों को क्यों अपॉइंट किया गया था, हमको क्या चाहिए, लेकिन आज जो हमने समझा है वो ये है। इससे ये तय होता है कि कमिटी का एजुकेशन कम है, कि वो क्या चाहता है वो खुद से डिसाइड करे, हम नहीं डिसाइड करें। हमेशा से हमें तो डिसाइड कर रहे हैं ना कि हम कौन होते हैं, साइकिल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जो भी चाहिए उनको हम ही तो डिसाइड कर रहे हैं ना, उनसे कब पूछा है हमने। पिछले जन्म के कर्मों का फल। I think one of the key parts about this conversation is that the language of rights and entitlements, has been used quite often, but in these situations in which these quote-unquote theatrical exercises put people to take a stand, they've often taken a stand, many people have taken a stand, which doesn't actually safeguard and protect rights. It's about knowing that there's a service to be delivered, and that should be delivered one way or the other, but rights seem secondary. इस वर्कशॉप में आने के बाद मुझे कुछ अलग नज़र आ रहे हैं और कुछ अस्पष्टता आ रही है। अगर जैसे अधिकार के मसलों को ही लेकर चले तो पहले हम यहीं तक थे कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने के लिए जो भी अति आवश्यक ज़रूरी चीज़ें वो मिलनी चाहिए, वही उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें ये भी समझ में आया कि नहीं, उतना काफ़ी नहीं है। अगर अधिकार को अगर देखा जाए तो इतना होना चाहिए कि एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने के लिए जो भी ज़रूरी है और वो भी जिसके साथ कंप्रोमाइज़ न किया जा सके, कोई समझौता ना हो, तब उसे अधिकार वास्तव में वो उसका अधिकार है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ गरीबी के भी मसलों पे जैसे हम उलझे रहते थे, तो एक चीज़ हमें स्पष्ट हुई है कि गरीबी के आधार जो होते थे हम लोग दो तरीके से देखते थे। एक तो आर्थिक स्थिति को पैमाने पर रखकर और दूसरा सामाजिक स्थिति को पैमाने पर रखकर। लेकिन इन दोनों में मतभेद हैं और समाज बढ़ जाएंगे, या मेरी भी विचारधाराएँ अलग है। लेकिन यहाँ एक जो उभर के आई चीज़ है इस कार्यशाला के दौरान कि गरीब हम उसे माने जो कि सशक्त न हो और जिसकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी न। और मैं जो अगर मेरे विचार पूछे तो मैं इससे सहमत हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ये लग रहा है कि जैसे बच्चे जो हमारे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या बच्चों को मतलब ऐसी बच्चा समझ के छोड़ दिया, उसको अधिकार बता रहे हैं मतलब ऐसी, क्योंकि बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है शायद। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चा ही गरीब है, क्योंकि जब अपन स्कूल में देखें या घर पे देखें तो हर जगह बच्चे का अपन अपमान करते हैं, कभी सम्मान नहीं करते। Rights based approach, it's to a lot of it is about yourself and changing things in you, things around you. So I think that is what will take more time, but that's the only thing that will work. That's the only thing that that will sustain, and that would involve a change not only in styles of working or how we look at a particular community or how we look at a particular place, but the change would be in how I look at myself, how I look at my family, how do I look at people in general. What I'm enjoying about the session is that the workshop is called Right to Act,
and the first sentence says exploring participatory theatre, but it's been 2 days and 1.5 days, and we still haven't gone into the theatre or the act bit. So it's slicing it out and dissecting it and touching it and feeling it, tasting it, So it's really understanding details, because it is these details that will come together and that's what will matter. So that's one way the workshop is going, in which I'm really enjoying and having a lot of fun. I'm looking forward for more. यहाँ पे इस वर्कशॉप में इस टूल को या उसको मतलब एडवोकेसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वी विल अडॉप्ट दिस टूल इमीडिएटली व्हेन हमको समझ में आएगा कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं. तो इस क्यू पे ज़्यादा मतलब प्रेशर था. सो दैट वाज द मोस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आई थिंक ऑफ दिस वर्कशॉप. Participation is not an event that they come and they stay and they go, whether they have successfully they have presented their voice or not. That's not an event. They might be unsuccessful at the first point of time, but that should not prevent them from the next presentation of theirs. So everybody can act. So it is not an event that it comes here now and it finishes there. It's a continuous process. With each event they get more and more sharper and more better for presenting their views and placing their views, placing their opinions, so that they are the partners of creating their own world. Theatre, I mean, it is all about working together in theatre, right? Like, even if you're delivering a monologue, you are in interaction with the audience, or you've already worked with other people on it. So theatre always has this, like, there's no way that you can work in isolation with theatre. What will you do? I mean, who will watch you? Who will you interact with? So theatre has that intrinsic quality of getting people together, of interaction, of communication. And of course, it's magical, like I said. So we all really like playing. Some of us forget it along the way, but we all really like playing, and to children it comes the most naturally, right? So when you start using theatre to work with them, it's not serious, like it shouldn't be serious even for adults. So it's not serious. You just start creating things from play, and that play space gives you another sort of, it gives you a mask to tell your stories, to come out with things that you otherwise would not talk about. क्या हो गया? चोट लग गई? ओह, मैं क्या करूं? डॉक्टर, कहाँ पे लगी? उल्लू बनाया। सुनो, पापा को उल्लू बनाए। इधर आते हैं। पापा, हाँ, आ रहा हूँ। बच्चों के एक्सप्रेशन को हम उनके राइट के रूप में देख रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट एंगल था. और जबकि मैं 10 साल से इसी में काम कर रहा हूँ कि सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और ये सब, तो इस वजह से मैं यहाँ आया. और जितना मैंने सोचा था कि ओ हाँ, ये बहुत दिलचस्प तक सोचा था, और इसके बारे में जानने की उत्सुकता थी कि और जाना जाए कि उनके राइट्स और एक्सप्रेशन का क्या संबंध है. वर्कशॉप की जो प्रक्रिया थी उसमें ये बहुत अंडरलाइन होके निकला कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. और हम जो थिएटर वाले हैं, आमतौर पे जो थिएटर के ज़रिए एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अपने ग्रुप के, समाज की आवाज़ बनने की बात करते हैं, वो भी उस एक्सप्रेशन के वैल्यू कितने समझ पाते हैं. अभी ऐसे सवाल मन में आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं भी उनमें से एक हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आवाज़ किसकी होनी चाहिए. हमारी आवाज़ होनी चाहिए, या जिनके लिए हम काम करते हैं उनकी आवाज़ होनी चाहिए, या जो हमको पैसा देता है उसकी आवाज़ होनी चाहिए. क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिन तक पहुंचना आपका पहला और आखिरी दोनों लक्ष्य होता है, तो उनकी आवाज़ आप कैसे समझते हैं. इस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो एक तो स्पष्टता है कि हर व्यक्ति नायक है, हर व्यक्ति अभिनेता है और वो एक्टिंग कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और जो लोगों की एक सोच बन गई है कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, और कुछ सीमित ग्रुप बन के इस चीज़ों को
हर जगह प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अब लग रहा है कि नहीं, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही ये भी एक चीज़ उभर के है कि वे लोग जो हकदार हैं, अगर वो अपने चीज़ों को अगर संस्कृति के माध्यम से रखे, नाटक के माध्यम से रखे, गानों के माध्यम से रखे, तो उसमें ज़्यादा जान होता है। अब तक ये इतना क्लेरिफिकेशन मेरे दिमाग में आ पाया कि पार्टिसिपेशन मतलब सिर्फ नाटक में उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं, बट सोसाइटी के अंदर ये थिएटर थ्रू पार्टिसिपेशन करेगा, एम्पावर होगा और सोसाइटी में भी अपनी आवाज़ रखना सीखेगा। And I think a lot of them have got a sense, and their reflections, their thinking while they're in the conversation are about, we can now see the parallels between the tools and the spaces provided by participatory theatre, the medium of participatory theatre, and the space where they live and they work and they make decisions about others and they make decisions and assumptions about other people's understanding. And I think that's been quite a shift from the first day when we came in to this sort of last final day, where people have been able to internalize but also reflect and enable their thinking, whether now in the organizations they work in or the spaces they work in, they would actually be able to use these tools or not, because they entail an engagement that has been very different from what they've been doing so far. A linear approach towards service delivery vis-a-vis an approach which enables people to demand delivery of certain kind based on their rights. I was wondering whether there is any one particular kind of participatory theatre approach that works. I mean, there could be different things for different contexts, different situations, different groups, different people that would work probably. So I was really like, when that whole discussion was on, I was really reflecting on what kind of theatre now, like after going back, or generally like even after the last workshop, what kind of changes I tried making in my approach to even just talking to people while creating theatre. Again, that was something that happened a lot, and it will continue, I guess. Yes, there is that anxiety and there is that tension, but it's more of the excitement tension than the nervous tension, you know. So I'm looking forward to going back now. Unlike yesterday, I was a little scared and I was a little nervous about what might come about. But today I see myself going back, looking forward and talking and sharing with my team members what's been happening here. And participatory theatre with the community, I think, is more of a thought, an idea, than an activity or an, you know, a thing to do. So it's that with which I'm going to go back home and to my work. Basumati tuar telang lahoma alu mera ga dularte lang joma Basumati huru to ben tuar telang lahoda alu mera ga dularte lang joma. It means I am a poor child and I am a poor child but I'm a jewel, and you are a poor child and you are a jewel too. But the whole song, it means कि let's not get bogged down by this poverty. हम साथ साथ में काम करेंगे, बासमती राइस उगाएंगे और उससे जो मूढ़ी वो जो बनता है उसको बना के हम उसको दूध में डाल के साथ में खा के खुश रहेंगे.